All right, straight to our top story. The movie which is making a lot of talking points, Kashmir Files, made by Vivek Agnihotri, is generating a lot of reactions from the audience. Meanwhile, it is also turning on the heat politically. The Congress had earlier tweeted, the Kerala Congress handle had earlier tweeted, which came under heavy fire from the Bharatiya Janata Party. And amidst this, to and fro between the political parties, the Kashmiri Pandits, those who are still looking for justice, their reaction to this moving is absolutely moving. बिल्कुल जो भारतीयता की सत्यता है, जो कश्मीर की सत्यता है, वो दिखाई गई है कि आज तक जो छुपाया गया था 30 साल से किसी को बताया नहीं गया मीडिया ने, लेकिन आज मीडिया बता रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, सत्यता का ज्ञान हुआ हमें भी। इट्स अमेजिंग, दिस मूवी इज अमेजिंग। कश्मीर जो भी बताया गया है वो रियलिटी में बताया गया, सच्ची बताया गया। जिसको भी हिस्ट्री का भी नॉलेज नहीं थे ना, इस मूवी से पता चल रहा है कि कैसा अत्याचार किया था कश्मीरी पंडितों के ऊपर। और इसमें सीधा सीधा सरकार के ऊपर हो गई, कांग्रेस सरकार पर टिप्पणी की गई सीधी सीधी की कैसे राजीव गांधी के राज में किया गया था। हमें विवेक अग्नि रंजन मल्होत्री को धन्यवाद और अनुपम खेर जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 1990 के दशक को आज हमारे सामने दर्शाया गया। देश में जो कर्तव्य नगन नाच हुआ, हमारे हिंदू पीड़ित कश्मीरी भाइयों को जिस तरीके से सर्कुलरिज्म के माध्यम से देश से बाहर निकाला गया और इस बाहरी माहौल में लाके उनको छोड़ा गया, हम इस चीज का पूर्णतः विरोध करते हैं। और हम हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस हालात और इस मुकाम पे देश को पहुंचाया है, जिससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। भारत माता की। पहली बार किसी पिक्चर के ही थ्रू, मूवी के ही थ्रू मेन स्ट्रीम में किसी ने बोला है कि कश्मीर इज अ सिविलाइजेशनल बैटल, इट इज अ मैटर ऑफ नैरेटिव्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड बिकॉज मेन स्ट्रीम में कश्मीर को एक टेररिज्म और अलग अलग चीजों से जोड़ के हम बार बार उसको एक इशू बना देते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की है और ये भी दिखाया है कि ये स्टेप जीरो है। पिक्चर इज अ स्टेप जीरो, 370 रिमूवल इज अ स्टेप जीरो। द अल्टीमेट गोल इज रीसेटलमेंट एंड ट्रेस दैट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी अगेन। कश्मीरी पंडितों की जो सच्चाई थी, जो हमारे से छिपाई गई थी, वो देखा किस तरह से अत्याचार किए गए, किस तरह से उन्हें मारा गया। एकदम उन्हें देख के हमें गुस्सा आता है कि हमें इतनी सच्चाई हमारे से छिपाई गई। ये मेरे हिसाब से हर भारतीय को फिल्म देखनी चाहिए। कश्मीर की जो सच्चाई है ना, वो हर आदमी को मालूम चलनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। अभी आज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है इस पूरी फिल्म पर, बयानबाजियां आ रही हैं। केरल कांग्रेस ने कहा है कि ये गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो सच्चाई है वो दिखाई गई है और उसको सब स्वीकार करो। कश्मीरी पंडितों के संग क्या हुआ है, एक जीनोसाइड जो महसूस हुआ उन लोगों को ना, वो हम लोगों को आप रूह कांप गई देख के। देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, पता चले कि कैसे क्या एक अपने ही देश के हिस्से में, एक स्टेट में जिसको वो लोग अपना अलग करार देते हैं और इस तरीके से मतलब उसको विभाजित कर रहे हैं, उसका एक विभिन्न अंग बनाए हैं, कहते हैं एक कमजोर अंग है देश का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस पिक्चर में देखें, मैं तारीफ करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी की, जिन्होंने इस तरीके का एक सब्जेक्ट चुना और ऐसी फिल्म बनाई। नहीं तो बॉलीवुड में इस तरीके की कोई फिल्म ही नहीं बनाना चाहता है। बहुत बहुत ज्यादा ही डरावनी फिल्म है वो। डरावनी फिल्म है मतलब ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ। हमको देख कितना डर लग रहा है, तो जो इनके साथ हुआ होगा उनको कैसा लगा होगा। मैं बोल नहीं सकता। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 90 से लेकर अभी तक जितना ही नुकसान किया हिंदुस्तान का, कोई नहीं कर सकता। फिल्म आपने देखी पूरी? आप अभी भी भावुक हैं। देखिए, ये फिल्म देखकर लौटे हैं, बुजुर्ग हैं और उसके बावजूद उनकी आंखों में आंसू हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकल रहे हैं और इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। भावुक इंडिया में रह के और इंडियन का ये हाल है, हाउ कैन वी टॉलरेट। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कश्मीर में, हमारे इंडिया में हुआ। हाँ, धीरे 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 सारा देश में फैलेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे। देश होने के नाते अगर हमारी कोई देश के साथ कोई गलत होता है तो उसका सबको समाधान करना चाहिए, ना कि कश्मीरियों के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ पिक्चर देख करके। अच्छा। हाँ, और जो हुआ गलत हुआ और हम ये चाहते हैं कि दोबारा से जो हमारे कश्मीरी पंडित जो है वहाँ पे उन लोगों को संरक्षण दिया जाए।
All right, let me now bring in my colleagues, those who are joining us at this moment, to get you a sense of how the public is reacting to this movie. Shivani is joining us from Mumbai. We have Mohit, who is in Delhi, and we have Nibir, who is joining us from Guwahati. Shivani, coming to you first. Vivek Agnihotri largely haven't seen a lot of success as a filmmaker. This movie really has hit it out of park for him. What are the reactions that you are getting from the film critiques as well? So here, first of all, if you talk about the reverse and the replies which we are getting from the film fraternity, people are saying that it is a great film and people should watch it. If it is bringing the reality forth the audiences and they are getting the glimpse as to what exactly happened, then everybody, every generation needs to get a look. In fact, today when we tried to ask Amir Khan about the film, he also said that he hasn't yet watched the film, but he will watch it because he is also getting positive responses that the film is great and it has shown some reality. In fact, he also shared his best wishes for the entire film cast and crew and to Vivek Agnihotri. And also speaking about the film's reaction which is coming out from the audiences, then definitely people are liking the story, and they are also saying that if this film would have been released earlier, then they would have a different perspective regarding any political party and whatsoever happened in Kashmir with Kashmiri Pandits. But especially talking about Mumbai as of now, but the film and the releases and in the theatres, then Bhiwandi, a very close area to Mumbai, is seeing that how the film ban is also taking place in several theatres, where the theatre managers are not putting up the volumes of the film. In fact, in Bhiwandi also we saw that how there was a show which was going on, and then the entire film was on mute mode. Only the screening was going on. Later that problem was also sorted out, and in fact the case has now been registered in Bhiwandi, which is very close area to Mumbai. And that is why people are saying that a film which has come after such a long period of time, when people are getting to see the reality, but the people otherwise those are trying to stop because of a political connection which the film reveals of that time. That is why now in fact the battle has also begun in Mumbai also between the Congress and the BJP party, where the BJP says that they are going to take all their leaders to show the film and of course their family members, and later they will also arrange free screenings for people. Okay, Shivani, stay on with me. Let's get in some more reactions from the people, those who have been watching this movie, about what is the sense that they make out of it. आज तक जिस सच्चाई से हम लोग को वाकिफ नहीं कराया गया था, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या तो फिर किसी संस्था के माध्यम से हो, हमें इस असलियत से रूबरू नहीं कराया गया था और काफी हद तक सच्चाई से हमें वाकिफ कराया गया है। फिल्म में ये कश्मीरी पंडितों का पिछला इतिहास छुपा है और जैसा उनके साथ हुआ है वह एक बहुत ही दुखद घटना है, और इसके प्रति हम तो यही कहेंगे कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। जिस तरह से हिंदू पंडितों का पलायन हुआ उस समय, ये फिल्म तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने, कुछ पहले के इतिहासकारों ने इसको छुपा दिया और इसको पूरा बनने नहीं दिया। आप तो महंत है, फिर फिल्म देखने आए हैं? नहीं, ये जो भारत की संस्कृति रहा है और जो विगत वर्षों आज़ादी के बाद देश में जो सरकारें रही हैं और जो भारत की संस्कृति, जो सभ्यता, उसको किस तरह से एक विशेष वर्ग के लोगों ने तोड़ा और भारत के लोग से उसको दूर रखा गया, लोग जाने नहीं, लेकिन आज देश राष्ट्रवाद की तरफ जा रहा है। जो विकट देश के प्रति जो षड्यंत्र रचा गया है उसको आज फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है कि समाज इसको जाने। 10 में से कितने नंबर देंगे इस फिल्म को? 10 में 10। 10 में 10। आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 देना चाहेंगे और इस फिल्म को टैक्स फ्री करवाना चाहेंगे। क्या कहेंगे? 10 में 10। टैक्स फ्री? हाँ, टैक्स फ्री। 10 में 10। Let me go across to Mohit right now. Mohit, politics are also in fact raging around this entire movie. In fact, Congress and the BJP sparring on this as well. What's the reaction, general reaction that we have got from the people in Delhi? A lot of, Kashmiri Pandits who had to flee the region at that in the 1990s have been living in Delhi. Well, yes, Ankit, the Kashmiri Pandits specifically say that this is a movie which clearly shows the plight of Kashmiri Pandits and what all they had to go through during that time of 1990s when they were forced out of their homes, the women were raped, and announcement was being made that the Kashmiri Pandits should leave their homeland within 2 days. And they still say that they are living a life in exile. They are still waiting to go back to their homeland. Now, after this all, a new political war started between the Bharatiya Janata Party and the Congress Party, where the
Congress party through their Kerala Congress Twitter handle clearly tried to whitewash the Kashmiri Pandits genocide, and they in a way gave clean chit to what has happened in Kashmir, saying that it was part of terrorism. No, it was part of terrorism, yes, but it was all being supported by the people like Yasin Malik, organizations like JKLF, who clearly killed people on the road. The Kashmiri Pandits were butchered. So no statement made by the Congress party on that regard. No statement on Yasin Malik. No statement on Bitta Karate. So that is where the BJP is hitting out. But the Kashmiri Pandits say they are still waiting return to their homeland. Ankit, back to you. Absolutely, and the wait for justice, and let me go across and take this to Nibi. The wait for justice continues. I mean, with the Congress at this moment on the receiving end politically, but there are many those who would be asking, Nibir, that it has been almost 8 years of the Prime Minister Modi government as well. Why are these people, Yasin Malik, Bitta Karate, still out? Yes, the movie has taken a very emotional and political turn in Assam as well. Emotionally, people have connected to the exodus of Kashmiri Pandits. However, today the movie has taken a political turn where we spoke with the BJP senior leaders. The BJP has slammed the Congress, saying that they did not do anything when the massacres of the Kashmiri Pandits happened. Senior BJP leader Piyush Hazarika directly attacked the Congress and saying that the Congress did not do anything, and that's why, as a mark of respect, as a mark of solidarity with the Kashmiri Pandits, there will be a special screening of the Assam cabinet tomorrow, where the cabinet ministers led by the CM himself will go to watch the movie. And today we also saw a lot of people coming out, and they connected with the issues of the Kashmiri Pandits. Assam Northeast has had a troubled past, so they are relating more to the issue of the Kashmiri Pandits, and they are relating to the brothers of Kashmir. Stay on with me. We have got some more reactions coming in on this. I really congratulate our Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah ji for abrogating 370, and that's the right step to bring justice to the people who have suffered in Kashmir. And I'm really happy and proud that they have taken this decision. And now we see a lot of development in Kashmir, and I hope that all the Pandits will get back their land and property and settle down there. They also know tax-free. Yeah, I have made tax-free. It is one of the most important movie where Desh Bhakti and other issues are involved, and unity and integrity of this country is involved, security of this country is involved. The Kerala Pradesh Congress Committee or the UDF in Kerala never discussed such a matter in any platform. We have never discussed this matter. We have never discussed anything about this film or the Kashmiri issue in the KPCC or UDF. We don't have any idea why this is not. I don't think that this is an official Twitter. There is no possibility that such a tweet is published by the KPCC. I will check with the PCC president. I will check with the concerned authority. Earlier also there was a complaint that there are some fake IDs connected with the PCC's official account. द कश्मीर फाइल पिक्चर के लिए मैंने अभी डीजीपी महोदय को कहा है कि हमारे प्रदेश के समस्त पुलिसकर्मी सुविधा अनुसार जब भी पिक्चर सपरिवार जाना चाहें तो उनको अवकाश वो दें, जिससे पुलिसकर्मी इस फिल्म को देख सकें. अपने आप में बहुत अच्छा फिल्मांकन और हमारे भोपाल के ही व्यक्ति की प्रमुख भूमिका उसके अंदर है, इसलिए संपूर्ण प्रदेश के पुलिसकर्मी इस पिक्चर को देखें, उसके लिए छुट्टी का कहा है. अपना नैरेटिव जो है, जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उस नैरेटिव को आगे चला रहे मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए सेलुलॉइड के जरिए. हकीकत वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं. हमें पता है यहाँ हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई थे वो यहाँ से किस तरह से निकाले गए, उस वक्त क्या क्या साजिशें हुई, हमें पता है. हमने हमेशा उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए, उनकी वापसी के लिए यहाँ पे हमने कोशिशें की और हमारा स्टैंड क्लियर है उसमें. लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक और साजिश है जिस देश के अंदर सिचुएशन को पोलराइज करना.
All right, with that, I'd like to thank all my colleagues for joining us at this moment. We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side. Stay tuned.